पहलगाम में कल जो आतंकी हमला हुआ था उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहा है और हर कोई आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग साझा कर रहा है। तब आज वडोदरा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रचंड विरोध जताया गया है। दरअसल फतेहगंज सैफरोन चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अग्रणी और सदस्य इकट्ठा हुए थे। उनकी ओर से पहलगाम के आतंकी हमले पर उग्र विरोध प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ आतंकवादियों का पुतला दहन भी किया गया। तो वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जोरदार विरोध किया गया, जिस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में घर्षण के दृश्य भी नजर आए थे। इसी के साथ इन सभी की ओर से पहलगाम के आतंकी हमले में मारे जाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। एक तरह सनातर खोटू है आनी अंदर 100% सरकारे पण આગળ આવીને એક્શન લેવા જોઈએ, કારણ કે આ રીતે ટુરિઝમ પર હુમલો કરવો અને ના રાજ્યવાદ ના જાતવાદ પૂછી અને જ્યારે હુમલો કરવો એ ખરેખર ખોટું છે। આના વિરોધના વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા અહીં આગળ પુતળા દહન કરવાની અંદર આવ્યું છે સેફ્રોન ટાવર પર। જેવી રીતે આપણને ખ્યાલ છે કે 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં 26 નિર્દોષ પ્રવાસીઓનું હત્યા કરવામાં આવી છે। એમને ધર્મ પૂછીને એમનું હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। ત્યારે આજે અમે બધા અહીંયા એકત્ર થયા છે અને આખા અખિલ ભારતીય સ્તરે અમે આ એક થઈને આ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે કે આજે આતંકવાદ ફેલી રહ્યો છે એ બહુ જ નિંદનીય ઘટના છે અને આની તમામ સ્તરે નિંદા કરવામાં આવે છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।